Okay, so and I had considered some circuits also based on the operational amplifier. I had connected capacitor in the input and in the feedback. The process of solving any operational amplifier based circuit is that you have to consider first virtual ground concept, and then you can use KCL and KVL in the circuit. First is virtual ground concept, and then KCL at node P or node N. If circuit is complicated, then KCL can be applied on other nodes also. Let us consider one circuit like this. Resistance R, new device connected in the feedback, like this, and positive terminal directly grounded, negative terminal is having a sinusoidal input voltage Vn. Okay, so this is the circuit. Then what to find? We need to find the output voltage. Determine output voltage in this circuit. By virtual ground concept, what we say that this voltage, the voltage at this node Vn will be equal to voltage at this node Vp, and since Vp is directly connected to the ground, therefore Vp is equal to 0. As Vp is equal to 0, therefore we can say Vn will also be equal to 0 by equation number 1. With the help of this equation, we can say if Vn is equal to Vp, and therefore this Vp is 0, therefore Vn will also be 0. Now let us apply KCL and KCL at node N. If you apply KCL at this node N, what will happen? The incoming current will be equal to the outgoing current. What is incoming current? That is this voltage minus voltage at this point divided by the resistance. What is outgoing current? This voltage at this node and this voltage output divided by this whatever resistance is here. But I will use the current equation of diode to find out the current inside the diode. Okay, let us go. Okay, so KCL at this node, what will be the incoming current? Vn minus Vn upon R. Incoming current is equal to, what will be the current through the diode? We know that the current going through the diode is equal to, current in the diode is equal to yes, I naught e to the power V, means voltage across diode, upon eta Vt minus 1. This is the equation of diode current.
where this I naught is the reverse saturation current, V is the voltage across the terminal of the diode forward voltage, eta is the characteristic constant of the diode, eta equal to 1 for germanium and 2 for silicon, and Vt is the thermal voltage minus 1. This is what. Okay, so this voltage V will be equal to Vn minus V naught. In fact, this is the actually voltage across diode, so this will be Vn minus V naught, and this is the forward current. So when diode is in forward bias, this term becomes very high because it is exponential and this difference across the diode is positive. Therefore this current in forward bias diode, this term e to the power v upon eta vt is very greater than 1. Therefore I naught e to the power v upon eta vt minus 1 is many times written as I naught e to the power v upon eta vt. Okay, good morning everyone, and let us concentrate on what is being discussed here. And this is a very well known equation of the diode current, and in forward bias this one is negligible, in reverse bias this one is important. Okay, so in forward bias this one is, I am neglecting this one and putting this equation as this. So now our equation, this equation turns equation number 2 from equation number 2, what I can say, V in minus Vn upon R equals to I naught approximately equals to V upon eta Vt. Good. This way we can say that we are going towards the solution of this equation, and Vn is already 0. I have from the equation number, you can say in the previously I have calculated that Vn equal to 0. Therefore this equation is now V in upon R equals to I naught and e to the power V. What will be V? V will be Vn minus V naught divided by eta Vt, because V is the voltage across diode, that is Vn minus V naught. Okay, so what I can do, this Vn is equal to 0, this already, this is Vn is 0, therefore this equation will turn towards Vn upon R is equal to I naught e to the power minus V naught upon eta Vt. Just solve this equation and find out the value of V naught. है ना, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, मेरी क्लास में कॉपी पेन लेके बैठना है, मैं पॉज करूंगा बीच में तो वहाँ पे खुद सॉल्व करके आंसर तक आना है. ओके, तो कई लोगों का आंसर आ भी गया होगा, हम लोग फटाफट देख लेते हैं. इसमें ई नॉट माइनस वी नॉट अपॉन ईटा वी टी इज इक्वल टू वी इन अपॉन आई नॉट इंटू आर, और वी नॉट अपॉन ईटा वी टी इक्वल टू एल एन वी इन अपॉन आई नॉट इंटू आर. ओके, थोड़ा सा और सॉल्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है. आउटपुट वोल्टेज दिख रहा है मुझे, आउटपुट वोल्टेज हो गया वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ईटा वी टी वी इन अपॉन आई नॉट इंटू आर. Oh sorry, ln log of this. So what we can see that output voltage is equal to log of input voltage. Therefore this circuit is called
logarithmic amplifier. You can see how easily we are able to do log of the input with the help of operational amplifier. What was the circuit? Again I will show you the circuit. What was the circuit? Circuit is like this. There was capacitor in the feedback, just diode in the feedback. Because of this diode we are getting input of log of the input in the output. That is the beauty of these circuits. So similar to my work means what I do changes into in the circuits. What changes I do? I just replace, manipulate the circuit elements. So what here we can do? We can interchange the elements and again solve using the same process of solving operational amplifiers and find out the results. Okay, that you do. In the meantime I will draw the circuit, and I hope you will get the answer also, that what will be the answer if I change diode from feedback to input. So what we have to do, the next problem, in the next problem we have to change the position of diode from feedback to this is the circuit. Oh no, I will take this is minus, this plus, and plus one was grounded, and diode is here, resistance is in the feedback like this. This is the diode, and input is applied to the diode. Okay, do the same process that we do for the operational amplifier circuits, that apply virtual ground, then KCL at node N, and then find out the output voltage. Tell me what happens. What is the output voltage? Okay, so by virtual ground same process is same. I have made a simple process. Virtual ground concept, the voltage at positive terminal will be equal to voltage at negative terminal, and the voltage at positive terminal is 0, therefore these two will be equal to 0. That is done by this one. Now KCL at node N. KCL at node N, what it will do? What KCL will do? Apply KCL and tell me the answer, that what you are getting after doing this. When I apply KCL at this node, then I have to take the input coming current. That current will be equal to the current of diode. Again diode is forward biased because here is positive power supply. This is positive power supply is greater than 0, and this one is 0, therefore this diode is forward biased.
is equal to the current Vn minus V naught upon R. I naught e to the power V upon eta Vt is equal to minus V naught upon R. So V naught equal to R I naught minus R I naught e to the power V upon eta Vt. This is the equation. Means what we are getting, the this V, what will be the V again, let me take V in minus 0, so this will be V in, again this will be V in, this will be V in, because V is the voltage across diode, that is V in minus 0. Okay, so this is anti-log amplifier. आपको क्या कंपोनेंट लगेंगे इसको बनाने में? क्या कंपोनेंट लगेगा? सिर्फ डायोड चाहिए, एक रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू पे आउटपुट डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, तो एक रेजिस्टेंस चाहिए और एक डायोड चाहिए और एक क्या चाहिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी, और बना सकते हैं एंटी-लॉग एम्पलीफायर. ओके, सो वी कैन डू एंटी-लॉग ऑफ एनी इनपुट विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट. Again, someone may ask that what will happen if I just reverse the polarity of the op amp, or sorry, diode? That is very good question. What will happen if I change polarity of the diode? This question may be asked in the GATE exam or IES exam, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है. नॉर्मली लोग, आप किसी बुक में देखोगे या कहीं पे भी देखोगे लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, तो जैसा मैंने पहले डायग्राम बनाया था वैसा ही मिलेगा. अभी मैंने जो बनाया, ये डायोड रिवर्स बायस, तो अगर डायोड रिवर्स बायस में है तब क्या होगा आउटपुट, ये कहीं मिलेगा नहीं. जो आपको मिलेगा नहीं, वहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट यूज करके पता करना पड़ेगा कि क्या आउटपुट होगा. सो दिस therefore this one becomes important for GATE, IES and other competitive exams. Therefore this is important. Okay, if this is important, then how will we find what will be the output voltage? Or can there may be question that this cannot be solved. There option आपको मिल जाएंगे ऐसे. एक ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो 0 होगा. दूसरे ऑप्शन में आपको मिल जाएगा आउटपुट वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस करंट इक्वल होगा कि मल्टीप्लिकेशन. तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा वी नॉट विल बी इक्वल टू जो अभी हमने फाइंड आउट किया, वैसा ऑप्शन भी मिल जाएगा. अभी हमारा कितना आया था, ये आया था. ये ऐसा आया था. एक ऑप्शन में मिल जाएगा आपको माइनस ईटा वी टी एल एन वी इन अपॉन आई नॉट इंटू आर, ऐसा ऑप्शन भी मिल जाएगा. एंड डी नन ऑफ दीज. ये आपके पास 4 ऑप्शन भी अवेलेबल है. इसको ध्यान से देखिए. 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं. 2 मिनट में कोई भी आंसर कर सकता है. ABCD से बताना है आपको कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है.
इसमें से मुझे अभी अभी एक सिंगल वोट आ गया है, पहला वोट, इस ऑप्शन सी को एक वोट मिल गया है। और कोई? अगर सब कोई कह देगा कि ऑप्शन सी है तो मैं ऑप्शन सी पर टिक लगा दूंगा, पर कुछ लोग कह भी नहीं पाएंगे ना, क्या कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आंसर आना भी चाहिए। ओके, सॉल्यूशन हम ऐसे ही करेंगे जैसे कि दूसरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। दिस वोल्टेज एट नोड एन, दिस नेगेटिव नोड इज इक्वल टू वोल्टेज एट नोड पी, because node P is directly grounded. Oh, very good, I got one vote for the first answer also. Yeah, for C option 2 A, होगा क्या कि इस केस में सी के लिए और ऑप्शंस बनते जा रहे हैं, ए और सी में ही आ रहे हैं ऑप्शंस, पर हम लोग देखेंगे कि क्या ये सही है, जो आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या सही है कि नहीं है, ये पहले देखना पड़ेगा आपको। उसमें प्रोसेस करके थोड़ा सा एटलीस्ट सॉल्व करके देख लेना चाहिए आंसर लिखने से पहले कि ये जो हम बता रहे हैं वो सही आ रहा है, सही है कि नहीं है। सबसे पहले हम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाएंगे और उसमें देखेंगे कि Vp इज इक्वल टू Vn होगा, दैट नेगेटिव टर्मिनल इज, पॉजिटिव टर्मिनल इज डायरेक्टली ग्राउंडेड, देयरफॉर नेगेटिव Vn, डी इज ऑल्सो ऑप्शन, समबडी इज सेइंग डी ऑप्शन, हाँ, कि नन ऑफ दी जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा है जिसमें हर एक ऑप्शन पॉसिबल है और वोट भी सारे ऑप्शंस को मिल रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि ये किस लेवल का क्वेश्चन है। सिंपल दिख रहा है, देखने में बहुत सिंपल, ऐसे ही दिख रहा है कि जैसे कि ये लॉग एम्पलीफायर है, बट वो लॉग ने एम्पलीफायर नहीं है। आप थोड़े से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर डायोड का पोलैरिटी चेंज है, डायोड जो है वो यहाँ फॉरवर्ड बायस में नहीं है, डायोड रिवर्स बायस में। डायोड जब रिवर्स बायस होता है तो सबसे पहले तो लोग यही मान लेते हैं कि डायोड जो है ओपन सर्किट होगा। आइडियल केस में क्या होगा, डायोड ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट डायोड होगा। जब डायोड ओपन सर्किट होगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ से जो इनपुट आ रहा है निगेटिव में कोई इनपुट अप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव जीरो है, तो डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंस क्या होगा, निगेटिव होगा, एंड डिफरेंस नेगेटिव होने से आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव सैचुरेशन होगा, और यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, और ये बोल देंगे कि आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो -15 वोल्ट होगा या -VCC के इक्वल होगा, वो कहीं भी नहीं है। तो कुछ लोगों ने डी ऑप्शन बता दिया, सही भी हो सकता है। अब दूसरा पर्सन क्या सोचता है कि मैं तो सॉल्व करके देखता हूँ, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेगा, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगाएगा, KCL एट नोड एन, नोड एन में KCL लगाएगा और बोलेगा कि Vin -0/R इज इक्वल टू -I0 इंटू R, just I equal to I0 e to the power I equal to I0 e to the power V upon eta Vt -1. So in the reverse bias case, somebody want to solve, what he will do, he will try to apply virtual ground concept first in this circuit, and then KCL at node n, and then KCL this equation, and in the reverse bias this becomes negligible because of negative value of this voltage across diode, and this becomes important. So Vin upon R equal to I0 minus of I0, and Vin equal to -I0 into R.
वी इन का तो रिलेशन मिला बट वी नॉट पे तो कुछ नहीं मिला. सो वी इन विल बी इक्वल टू minus I naught into R. Okay. So what is the answer in this case? मतलब मेरा ये था कि कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये और ये आई नॉट इंटू आर आएगा. वोल्टेज अगर आप मेजरमेंट पे डिपेंड करता है, माइनस नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, बट आई नॉट इंटू आर आएगा. आई नॉट इंटू आर जो वैल्यू है, दिस आई नॉट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, रेजिस्टेंस वैल्यू पे डिपेंड करेगा. तो ये जो है वी नॉट नहीं है, ये जो इक्वेशन आया है वी नॉट का नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है. यहाँ पे किसी ने कहा भी नहीं. ठीक है. अब वी नॉट इक्वल टू जीरो भी सही नहीं है. जीरो इसलिए सही नहीं है क्योंकि जीरो नहीं होगा. ओपन सर्किट के केस में जीरो तो हो नहीं सकता. यहाँ पे इनपुट थोड़ा सा भी लगेगा तो ये सैचुरेट होने लगेगा. मोस्ट ऑफ द केसेस में सैचुरेटेड आउटपुट वोल्टेज आएगा और नन ऑफ दीज आंसर सही है. आंसर इसका एक्चुअली ये वी इन का रिलेशन आ गया एंड देयरफॉर वी फीडबैक इज ओपन negative input. So it will either follow the input if input value is small, or minus VCC or minus V saturation, which negative saturation will be the output voltage. Okay, therefore output voltage is none of these. आई वॉन्ट से जीरो. जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव है और यहाँ पर जीरो है, तो ये डायोड रिवर्स बायस में होगा. ओके, दिस इज हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व. ओके, you can think about it, you can discuss it, and if still you are not able to understand, you can post into the Google Classroom. I will explain it again. Let me consider one more problem before time ends. Next problem of operational amplifier is like this. Input is applied at this terminal and there is one resistance and output is like this. Determine the relation between output and input, or we have to find out this voltage, output voltage. I will give you options also. Option A is 0, option B is minus V sat, option C is plus V saturation, option D is Vn. Very good. These are 4 options, so you can tell options also. मुझे लगता है विकास को समझ में आ गया है प्रोसेस, तो मैं फिर भी बाकी सबके हेल्प के लिए थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि आप यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगाओगे तो दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू दिस वोल्टेज, Vn will be equal to Vp, and because Vp is equal to Vn, therefore Vn all will be also equal to Vn. यहाँ पे आप KCL अप्लाई करके देख लीजिए क्या हो जाएगा. Vn minus V naught upon R, this is outgoing current, is equal to 0, or V naught will be equal to Vn and V naught will be equal to Vn. Therefore this one is very nice, very correct. Almost everyone is getting correct answer. This is very nice question and everyone got the correct answer also. So this is the answer. Okay,
आप कोई बोलेगा कि अरे सर इसका फ़ायदा क्या हुआ ये सर्किट बनाने का, जैसा आउटपुट वोल्टेज है वैसे ही तो इनपुट वोल्टेज है। मतलब मैंने जो इनपुट यहाँ अप्लाई किया Vn, वही सेम आउटपुट मिल रहा है। देन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ सर्किट्स? इस सर्किट बनाना नहीं चाहिए। ओके, इससे पहले मैं इसका रीजन बताऊं, मैं आपको ये बता देता हूं कि इसका नाम क्या है। इस सर्किट का नाम है वोल्टेज फॉलोअर। दिस सर्किट इज कॉल्ड वोल्टेज follower circuit, means this follows the input voltage follower. One other name is given to this is unity gain amplifier. Unity gain amplifier, this is also called unity gain amplifier. Some of the books give it name buffer amplifier. बट मैं आपको इसका एप्लीकेशन बता देता हूँ। ओके साक्षी, बफर एम्पलीफायर मैंने नाम दिया, बफर एम्पलीफायर। आपको मैं इससे पहले बता दूं कि इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज इन इम्पीडेंस मैचिंग। एप्लीकेशन इन इम्पीडेंस मैचिंग, impedance matching or load transfer. What is happening here? We are applying input voltage to a very high input impedance here, very high input impedance. Therefore, source loading effect will not come. You can apply 2 volt, you can apply 5 volt, and whatever internal resistance of the input doesn't change the output voltage. First advantage is that this is providing high input impedance and low output impedance. Okay, so for this is used for impedance matching, and it may provide some delay, some unit delay. So delay circuit also, this is used for delay also, delay circuit, for providing some delay in the input. So this is also a delay circuit. Okay, this is how we can go for the different kind of circuit. One question I am leaving here, and answer of this question is to be posted into the Google Classroom. The question is like this: plus 5 volt minus 5 volt and minus plus 1 kilo ohm resistance is here, 1 kilo ohm resistance is here, this terminal is grounded, here is 2 volt input, here is 1 kilo ohm resistance, here is 2 kilo ohm resistance, output voltage is measured here. This is the problem as assignment, which will consist of 5 marks, and you have to post the answer into the Google Classroom. I will post question for this. Okay, thank you so much. Before going, please write your roll number in the chat. Do not forget to write your roll number in the chat.